আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ ষ্টুডিঅ'ত মই অস্মিতা গোস্বামী যোৰহাটত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নৈশ সফৰৰ সময়তে চুৰিকাণ্ড কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতে সুৰুঙা বুজি চুৰৰ চাফাই অভিযান এটি ৰোডত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খোজ কাঢ়ি থাকোতে কাষৰ দোকানত চুৰি এছপি অফিচৰ কাষতে চুৰিকাণ্ড চুৰে লুটি নিলে দোকানৰ সা সামগ্ৰী যোৰহাটৰ এটি ৰোডৰ এখন গেলামাল দোকানত নিশা চুৰে লুটপাট চলাই নগদ ধন আৰু সামগ্ৰী চুৰি কৰি নিয়ে সিসি কেমেৰা চুৰে দোকানখনৰ ভিতৰত নিশা 12:29 চুৰি কৰি থকা দেখা গৈছে নিশা 12 বজাৰ পিছত এই দোকানখনৰ কাষেৰে খোজ কাঢ়ি পাৰ হৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী আৰু সেই সময়ছোৱাতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সফৰৰ সময়ছোৱাতে এনেদৰে চুৰে চলালে লুটপাট কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ মাজতো কিন্তু সুৰুঙা বুজি চুৰৰ চাফাই অভিযান যোৰহাটত এটি ৰোডত য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খোজ কাঢ়ি আছিল নিশাৰ ভাগত আৰু সেই সময়ছোৱাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে খোজ কঢ়াৰ পিছতে কাষৰ দোকানত এক চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে এছপি অফিচৰ কাষতে চুৰিকাণ্ড চুৰে লুটি দিলে দোকানৰ সা সামগ্ৰী যোৰহাটৰ এটি ৰোডৰ এখন গেলামাল দোকানত নিশে চুৰে চলালে লুটপাট লগতে নগদ ধনৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰি নিয়ে সিসি কেমেৰা চুৰে দোকানখনৰ ভিতৰত নিশা 12:29 চুৰি কৰি থকা দেখা গৈছে নিশা 12 বজাৰ পিছত এই দোকানখনৰ কাষেৰে খোজ কাঢ়ি পাৰ হৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কিন্তু তাৰ মাজতো কিন্তু সুৰুঙা বুজি এনেদৰে চুৰে চলালে লুটপাট যোৰহাটৰ এটি ৰোডৰ এখন গেলামালৰ দোকানত সিসি কেমেৰাত বন্দী হৈছে সমগ্ৰ দৃশ্য নিশা 12 বজাত এই সময়ছোৱাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সেই স্থানেৰে পাৰ হৈ গৈছিল আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে কালিৰ দিনটোত কেবিনেটৰ বাবে যোৰহাটত উপস্থিত আছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাৰ পূৰ্বে তেওঁ হাতীয়কলৈ গৈছিল আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাওঁ যে যোৰহাটত কেইবাটাও অভিলাষী প্ৰকল্পৰ তেওঁ আধাৰশিলা ইতিমধ্যে উন্মোচন কৰিছে আৰু তাৰ পিছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে নিশাৰ ভাগত তেওঁ কেবিনেটত উপস্থিত থকাৰ পিছতে নিশাৰ ভাগত এটি ৰোডত এনেদৰে নিশা সফৰ কৰিছিল আৰু যোৰহাটৰ যি সমস্যা আছে সেইসমূহ বুজাৰ চেষ্টা কৰিছে জনসাধাৰণৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ পথ তেওঁ খোজকাঢ়ি যোৰহাটৰ এটি ৰোডৰ কাষেৰে এনেদৰে পাৰ হৈ গৈছিল আৰু সেই সময়তে চুৰে চলালে চাফাই অভিযান কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ওপৰত ক্ষিপ্ত অংকিতা দত্ত বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাৰ মানুহ কিনি থোৱাৰ দৰে ঘটনাবোৰ হৈ আছে কিন্তু মুখ কোনেও কিনিব নোৱাৰিলে যুৱ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ অজুহাততে হঠাতে যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তক অপহৰণ কৰাক লৈ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে দত্তই কংগ্ৰেছ নেতা বৰ্ধন যাদৱৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰি চুৰ ডকাইতি বিভিন্ন কেলেংকাৰীত জড়িত হৈ থকা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ব্যক্তিগৰাকী এতিয়া অসমৰ কংগ্ৰেছী ৰাজনীতি পৰিচালনা কৰি আছে বুলি মন্তব্য অংকিতাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ইনচাৰ্জ জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়াই কৈছে তেওঁ গম নাপায় ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া প্ৰেচিডেণ্টে কৈছে তেওঁ গম নাপায় মানে কোনে গম পায় বিজেপিয়ে গম পায় নেকি সেইকাৰণে মোৰ লগত যিটো হৈছে যে কেৱল মোৰ লগত নহয় ষ্ট্ৰাগলাৰ্ছবিলাকৰ লগত যাৰ হাতত মানে কাৰো হাত নাই ওপৰত ৰাজীৱ ভৱনৰ গুৱাহাটী ৰাজীৱ ভৱনত কোনোবাই প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ দিবলৈ এটা চুৰ ডকাইত আহিছে হা স্কেম কৰি পেলাই ৰামজেছ কলেজৰ তেওঁ আহিছে ৰাজীৱ ভৱনে গমেই নাপায় আমাৰ ইজ্জত আমাৰ মান সন্মান নাই নেকি CBIলে কেৰেপ কৰা নাই 2 মাহৰ আগতে মই কলিকতাৰ পৰা আহিছোঁ মিডিয়াত যে এইবোৰ সম্প্ৰচাৰ হয় কি কংগ্ৰেছৰ ভিতৰতে বহুত মানুহ কিনি থোৱা হৈছে তেনেকুৱা এটা ষড়যন্ত্ৰ হৈছে যেন পাইছোঁ আমিতো দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ আমাক বাধ্য কৰিছে ন আমাক পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছে আমিতো এৰি যাব বিচৰা নাই আমি পদৰ পৰা আমাক বাধ্য কৰিছে মই কংগ্ৰেছী হয় কংগ্ৰেছী থাকিম ঘৰত বহি থাকিম ৰাজনীতি নকৰোঁ আৰু কি কৰিম স্বীকৃতি নালাগে অঞ্জন দত্তৰ তেজ আছে সাহসৰে মই ৰাজনীতি কৰিছোঁ দেউতা হেৰুৱাৰ পিছত যে এই পৰ্যায়ে পাইছোঁ ব্লু ব্লাড নহয় কাৰোবাৰ সন্তান হোৱাৰ কাৰণে পোৱা নাই মই অংকিতা দত্তই যোৱা সময়ছোৱাত
দলটোৰ কাৰণে যুৱ কংগ্ৰেছ মজবুত কৰিবলৈ চেষ্টা লৈছে, সেইখিনি শলাগিব। এই ক্ষেত্ৰত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে অপসাৰণ কৰা বুলি যোৱাকালিৰ বাতৰিটো একেবাৰে ভুল বাতৰি, কোনো সত্যতা নাই। আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত যিহেতু আমি বাধা দিব নোৱাৰোঁ, সেই গতিকে আমাৰ মন থাকক মন নাথাকক দলীয় কৰ্মী হিচাপে সহযোগ কৰিব লগা হয়। সেই গতিকে তাত আৰু আমাৰ ব্যক্তিগত কোনো কথা নাথাকে। কিন্তু অংকিতা দত্তই যোৱা সময়ছোৱাত দলটোৰ কাৰণে যুৱ কংগ্ৰেছ মজবুত কৰিবলৈ চেষ্টা লৈছে, সেইখিনি শলাগিব। কিন্তু অংকিত দত্ত নিজেই খুব প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সস্তীৰ সন্মুখীন হ'ল। মই এটা বাইট চাইছো কৰবাত তেওঁ কৈছিল যে মই যোৱা ছেপ্টেম্বৰ মাহত নিযুক্তি পাইছিলো আৰু অক্টোবৰ মাহত মোৰ কমিটি গঠন হৈছে, ডিচেম্বৰ মাহতে নতুনকৈ নিৰ্বাচন কৰাৰ কাৰণটো বুজি পোৱা নাই। প্ৰকৃততে তেওঁৰ নিযুক্তিটো হৈছিলে এটা এৰেঞ্জমেণ্ট, যিটোত প্ৰকৃততে যোৱা সময়ৰ নিৰ্বাচনত কামৰুল ইছলাম চৌধুৰী নামৰ এজন যুৱক আমাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈছিল। তেওঁ আমাৰ দল ত্যাগ কৰি অসম গণ পৰিষদলৈ গুচি গ'ল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত অংকিতা দত্ত ডাঙৰীয়াই নিক দিছিলে। গতিকে যুৱ কংগ্ৰেছৰ যিসকল ইলেকশ্যন অথৰিটি তেওঁলোকে ক'ব পাৰিব যে নতুন সভাপতিৰ পৰা এটা নতুনকৈ সময়সূচী কাউণ্ট কৰিলে হয় নে সামগ্ৰিকভাৱে প্ৰথম যি নিৰ্বাচন হৈছিল কামৰুল ইছলাম চৌধুৰী নিৰ্বাচিত হোৱা সেইটোৰ পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে গোটেই কাৰ্যকালটো লৈছে। সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কিছু কথা নিৰ্ভৰ কৰিব। আৰু ইফালে যুৱ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ। অংকিতা দত্তক অপসাৰণেৰে আৰম্ভ হৈছে নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ। ৰাজীৱ ভৱনত AICCৰ নেতাৰ ভিৰ, সংবাদ মেলত ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচনৰ কথা। জিতেন্দ্ৰ সিং বৰ্ধন যাদৱ ইতিমধ্যে গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছেহি। পুনৰবাৰ জনাইছো যে ইতিমধ্যে যুৱ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ হৈছে আৰম্ভ, আৰু য'ত ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে অংকিতা দত্তক অপসাৰণেৰে নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছে। ৰাজীৱ ভৱনত AICCৰ নেতাৰ ভিৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সংবাদ মেলত ঘোষণা কৰাৰ কথা নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত জিতেন্দ্ৰ সিং আৰু বৰ্ধন যাদৱ গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছেহি, আৰু আজি দিনৰ 2 বজাত সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনক লৈ যেনেধৰণৰ স্থিতি সেয়া প্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু অংকিতা দত্তৰ সেই বিস্ফোৰণ ঘটাইছে ইতিমধ্যেই বৰঝাৰ বিমানবন্দৰ। তেওঁ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অহাৰ পিছতে তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছ নেতা বৰ্ধন যাদৱৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কেতবোৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য আনিছে, য'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে চুৰ ডকাইতে এতিয়া সংবাদমেল দিব পৰা হ'ল। আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে এই সমগ্ৰ বিষয়টো যিটো অংকিতা দত্তক অপসাৰণ কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত কোনেও নজনা বিষয়টো বা অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰা বিষয়টোক তেওঁ ৰহস্যৰ গুণ পোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু হাস্যকৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে। লগতে কিহৰ ভিত্তিত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল তাক লৈও তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। অংকিতাৰ এইসমূহ বিস্ফোৰণ যে আমাক আন্ধাৰত ৰাখি কিয় অপসাৰণ কৰা হৈছে, কোনো ধৰণৰ তথ্য কিয় সদৰি কৰা হোৱা নাই সেয়া তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু CBI ইডিলৈ কেৰেপ নকৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে অংকিতা দত্তই। 2 মাহৰ পূৰ্বে তেওঁ কলকাতালৈ গৈ ইডিৰ যি জেৰাৰ সন্মুখীন হৈছিল, আৰু এনেদৰে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কি গুজাৰিছে, য'ত বিজেপিয়ে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাৰ মানুহ কিনি থৈছে বুলি এক মহা বিস্ফোৰণ ঘটাইছে। মুখ কোনেও কিনিব নোৱাৰিলে, আৰু সেইবাবে তেনেধৰণৰ তেওঁ ষড়যন্ত্ৰ বুলি হোৱা কথা উল্লেখ কৰিছে। কংগ্ৰেছ নেতা বৰ্ধন যাদৱৰ বিৰুদ্ধে যিগৰাকী আজি সংবাদমেলত বা ৰাজীৱ ভৱনত উপস্থিত থকাৰ কথা, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কেইবাটাও বিস্ফোৰণ ঘটাইছে অংকিতা দত্তই। কংগ্ৰেছ নেতাই শ্লোগানহে আওৰাই থাকে বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। আৰু কিহৰ ভিত্তিত অপসাৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল, য'ত ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে অজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰা বিষয়টোক হাস্যকৰ আখ্যা অংকিতা দত্তৰ। আৰু ইতিমধ্যে তেওঁ জনাইছে যে যুৱ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ হোৱাৰ কথা। অংকিতা দত্তক অপসাৰণেৰে এই নিৰ্বাচনৰ যুঁজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে বিগত সময়ছোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ৰাজ্য চৰকাৰ কেইবাটাও হঠকাৰী সিদ্ধান্ত, মূল্যবৃদ্ধিকে আদি কৰি বহুকেইটা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু যুৱ কংগ্ৰেছৰ সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দি আহিছিল। বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল অংকিতা দত্তই। আৰু তাৰপিছতেই কালিৰ দিনটোত য'ত শদিয়াত ভাৰত জোড়ো কাৰ্যসূচীৰ অন্তিম দিন, সেই দিনটোতেই অংকিতা দত্তৰ অপসাৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ল। আৰু সেই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে সংবাদ মাধ্যমত সদৰি হোৱাৰ পিছতে তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে তেওঁক পোনপটীয়াকৈ কিয় জনোৱা হোৱা নাই বা সংবাদ মাধ্যমত এইসমূহ তথ্য পূৰ্বতে কোনে প্ৰকাশ কৰিছে তাক লৈও তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। আৰু অংকিতা দত্তৰ মহা বিস্ফোৰণ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, য'ত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে 14 ছেপ্টেম্বৰত কমিটিৰ প্ৰথম কাৰ্যনিৰ্বাহক হৈছিল, আৰু তাৰপিছত খুব কম সময়ৰ বাবে তেওঁলোকে মাত্ৰ 11 মাহ কাম কৰাৰ তেওঁ
সময় পাইছিল আৰু এই মুহূৰ্তত আমি ৰাজীৱ ভৱনলৈ লৈ গৈছো পোনপটীয়াকৈ सभी मीडिया के हमारे साथियों का जितने भी लोग यहाँ पर आज इस यूथ कांग्रेस की बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आए हैं, आप सभी का मैं इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हमारे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, आगे लेकर जाने के लिए मेरा नाम वर्धन यादव है। मैं यूथ कांग्रेस का आसाम का इंचार्ज हूँ। मेरे साथ एजाज जी हैं जो कि मेरे साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और आसाम के इंचार्ज हैं। साथ ही में हमारे साथ नासिर जी हैं। नासिर जी यूथ कांग्रेस के इलेक्शन कमिश्नर हैं जिनको आसाम के लिए अपॉइंट किया गया है। साथ ही में अरुण गर्ग जी हैं दिल्ली से जो कि PRO है, प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर आसाम के लिए, जो चुनाव का एक प्रोसेस है उसको लेकर के हम आज आपके बीच में आए हैं। तो साथियों, शुरुआत करना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि यूथ कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और जब भी कांग्रेस को जरूरत पड़ी है, जब भी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को जरूरत पड़ी है, तो यूथ कांग्रेस सबसे आगे और सबसे पहले कंधे से कंधा मिला करके कांग्रेस पार्टी के लिए खड़ा रहता है और हमेशा पहली पंक्ति में लड़ाई लड़ता है। और हमारा यह सौभाग्य है कि जब से यूथ कांग्रेस की स्थापना हुई है तब से एक बहुत बड़े लेवल पर, चाहे वो पार्टी के बड़े पद हो, चाहे वो विधानसभा में, लोकसभा में आवाज की बात हो, समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने यूथ कांग्रेस के लीडर्स को आगे किया है। समय समय पर कांग्रेस पार्टी ने यूथ कांग्रेस की लीडरशिप को नर्चर किया है, उनको विभिन्न स्तरों पर मौका दिया है। और 2009 से जब से श्री राहुल गांधी जी ने यूथ कांग्रेस NSUI की कमान संभाली, तब से एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज पूरे कांग्रेस पार्टी के अंदर आया। और आप सभी जानते हैं कि 2009 के बाद से यूथ कांग्रेस NSUI दोनों फ्रंटर में एक चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई और एक आम परिवार के साधारण युवा को चुनाव के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से श्री राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के दरवाजों को खोलने का काम किया। और वही कारण है जिसकी वजह से मेरे जैसे एजाज जी जैसे, अरुण भाई जैसे, नासिर भाई जैसे और हमारे जो साथी यहाँ पर हैं, वाजिद भाई जैसे, शरीफा जी जैसे, जुबेर जैसे, देवी जैसे, सुमन जैसे, बहुत से हजारों लाखों कार्यकर्ताओं को चुनाव के माध्यम से, बिना किसी नेता के आशीर्वाद से इस कमरे के अंदर आने का मौका मिला। राहुल गांधी जी की यह सोच थी कि आखिरी से आखिरी पंक्ति का व्यक्ति, देश में रूरल बेल्ट से निकला हुआ व्यक्ति, आदिवासी युवा, एक दलित परिवार का युवा, एक माइनॉरिटी परिवार का युवा, जिसके पास किसी बड़े नेता का आशीर्वाद नहीं है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है, वो इस प्रोसेस के माध्यम से आगे आ सकता है, चुनाव लड़ सकता है और अपना नेतृत्व खुद तय कर सकता है। और इसी पंक्ति में चलते हुए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए आपके बीच में आए हैं। साथियों, 27 नवंबर 2018 को आसाम में यूथ कांग्रेस की एक नई कमेटी बनी थी चुनाव के माध्यम से। और जैसा कि हमारे यूथ कांग्रेस का कॉन्स्टिट्यूशन है, जब चुनाव होता है तो मेंबरशिप होती है। मेंबरशिप के साथ साथ हर लेवल पर, असेंबली लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर नई कमेटियां बनती हैं, नए लोग चुनाव जीत करके आते हैं। तो यूथ कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो कमेटी का टेन्योर 3 साल का होता है। यदि अगर कोई मेंबर बनता है, मेंबरशिप प्राप्त करता है, तो 3 साल के लिए यूथ कांग्रेस का मेंबर बनता है। कोई चुनाव जीत करके आता है तो 3 साल के लिए उसका टेन्योर, चुनाव जीत करके उसका टर्म होता है। 3 साल के बाद हम फिर चुनाव में जाते हैं।
तो जैसा कि आप जानते हैं 2018 में लास्ट इलेक्शन हुआ था। 2018 में जब 3 साल जो हमारे पीवाईसी प्रेसिडेंट थे उनका टेन्योर खत्म हुआ, लेकिन 3 साल के बाद पार्टी चुनाव कराने की स्थिति में नहीं थी और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज थे जिसकी वजह से हमें यह था कि आने वाले 1 साल तक हम चुनाव को आगे लेकर के जा सकते, जिसकी वजह से एक कोविड बहुत बड़ा माध्यम था। कोविड में हम चुनाव नहीं करा पाए क्योंकि चुनाव कराने के लिए बूथ पर जाना पड़ता है, घरों में जाना पड़ता है, युवाओं से मिलना पड़ता है, फिर मेंबरशिप करानी पड़ती है। तो 1 साल का एक्सटेंशन हमने आसाम में कोविड को लेकर के दिया था, लेकिन ऑलरेडी जो पुराने पीवाईसी प्रेसिडेंट थे उनका टर्म कंप्लीट हुआ, तो हमने जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट उस समय जो जीत करके आए थे अंकिता दत्ता जी, उनको मौका दिया था एज ए पीवाईसी प्रेसिडेंट। और ये लीडरशिप ने कहा था कि जब भी चुनाव का सही समय होगा तो यूथ कांग्रेस मेंबरशिप के माध्यम से इलेक्शन के लिए जाएगी। अभी 1 साल के बाद, 1 साल जो ओवरड्यू यूथ कांग्रेस का टर्म हुआ, उसके बाद यात्रा आसाम प्रदेश में थी, तो हमारी कोशिश थी कि यात्रा के दौरान हम मेंबरशिप को लॉन्च ना करें। आसाम की सीनियर लीडरशिप और दिल्ली की सीनियर लीडरशिप ने हमें ये कहा कि यात्रा जब कंप्लीट आसाम में हो जाएगी तो उसके बाद हम यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप शुरू करेंगे, क्योंकि आज एक माहौल है, आज पूरे आसाम में कांग्रेस पार्टी का बड़ा जबरदस्त माहौल है। यात्रा जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स से गुजरी है वहां पर युवाओं में जोश है यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप को लेकर के, और हमें उम्मीद है कि आज जब हम इलेक्शन का शेड्यूल लॉन्च करेंगे, मेंबरशिप लॉन्च करेंगे, पूरे आसाम में राहुल गांधी जी की सोच के साथ यूथ कांग्रेस से जुड़ने वाले युवाओं की संख्या बहुत अच्छी रहने वाली है। पूरे 35 डिस्ट्रिक्ट्स में निरंतर पिछले 2 दिन से हम हजारों युवाओं के टच में हैं जो यूथ कांग्रेस की मेंबरशिप लेना चाहते हैं, चुनाव लड़कर आगे आना चाहते हैं। तो इलेक्शन शेड्यूल को अनाउंस करने के लिए हमारे साथ नासिर जी हैं। नासिर जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि चुनाव का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के लिए हमारे पास इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन यूथ कांग्रेस के पूरे शेड्यूल को आपके सामने बताएगा। तो मैं नासिर जी से रिक्वेस्ट करता हूं, नासिर जी आप इलेक्शन शेड्यूल की शुरुआत करें। नमस्कार साथियों, काफ़ी तफसील से वर्धन जी ने पूरे प्रक्रिया के ऊपर बताया कि यूथ कांग्रेस का जो प्रोसीजर है और जो सिस्टम चलता है उसके बारे में। और आज जो हमारे साथ वर्धन जी इंचार्ज है और एजाज जी है और हमारे अरुण भाई जो PRO है, हम जो इलेक्शन जो करवाते हैं यूथ कांग्रेस का, ये सोच के करवाते हैं कि आने वाले जो कल के लिए और शुरू में जो नौजवान हैं जिनको मौका नहीं मिल रहा ग्रास रूट से, तो उनको मौका मिलने के लिए हम लोग इलेक्शन के माध्यम से ये सिस्टम चालू है। और काफ़ी इसमें चेंजेस हुए, जैसा कि बैलेट पे इलेक्शन कराया गया, फिर उसके बाद आपको टैब पे कराया गया। अब जो इलेक्शन का सिस्टम है बिल्कुल फॉर्मेट चेंज है, उसका सिस्टम आपको मोबाइल के माध्यम से कराया जाएगा। इलेक्शन जो भी है कैंडिडेट अपना वोट अपने मोबाइल से ही कर पाएगा। इसके लिए तो इसके तफसीलात तो अरुण गर्ग जी बताएंगे आपको PRO। मैं आपको शेड्यूल के बारे में थोड़ा बता दूं कि नॉमिनेशन हम लोग का स्टार्ट हो रहा है 18 दिसंबर से और 27 दिसंबर तक हमारा नॉमिनेशन चलेगा। ये पूरा प्रक्रिया ऑनलाइन चलेगी। इसके अंदर जो भी कैंडिडेट अगर लड़ना चाह रहा है वो अपना नॉमिनेशन वेबसाइट पे जाकर और अपलोड करे, और चाहे अपने मोबाइल से भी कर सकता है कि वो अपने नॉमिनेशन को 18 से 27 के अंदर अपना नॉमिनेशन दे सकता है। और उसी के अंदर अगर ऑब्जेक्शन है, अगर किसी कैंडिडेट को ऐसा लगा कि किसी का ओवरेज है या किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड है जो उसके ऊपर एलिगेशन लगा हुआ है जो पार्टी के लिए नुकसानदायक है, तो वो आदमी अपने आप को कंप्लेंट कर सकता है कि इसके ऊपर हमारा कोई एलिगेशन है। उसके बाद हम लोग उसकी इंक्वायरी करते हैं और फेम जैसी टीम केजरीवाल जी वगैरह जो लोग हैं हमारे साथ सिस्टम में, वो लोग इसकी पूरी इंक्वायरी करते हैं। उसके बाद उसका डिसीजन देते हैं कि वो कॉन्टेस्ट आगे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। स्क्रूटनी नॉमिनेशन हमारा 28 तारीख को होगा और स्क्रूटनी में हम लोग जिसी कैंडिडेट के ऊपर अगर ऑब्जेक्शन आएगा तो उनको बुला के पूछा जाएगा। और फाइनलाइज नॉमिनेशन होगा 29 को, और आपको 29 के बाद आपको वेबसाइट पे पूरे कैंडिडेट की लिस्ट मिल जाएगी।
जो कैंडिडेट्स असेंबली लेवल पे लड़ रहा है या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लड़ रहा है या आपको स्टेट कमेटी के लिए, स्टेट प्रेसिडेंट के लिए, वो आपको वेबसाइट पे पूरा अवेलेबल रहेगा। मेंबरशिप जो स्टार्ट होगी वो जनवरी 4 को 2023 को स्टार्ट होगा मेंबरशिप। उस दिन से मेंबरशिप स्टार्ट होगी, पूरा 1 महीना चलेगा। आपको फरवरी के 3 तारीख को आपको मेंबरशिप क्लोज होगा। तो ये आपको पूरा आपके नॉमिनेशन और शेड्यूल का आपको बताया गया, और इलेक्शन मॉडल के हिसाब से आपको क्या क्या सबमिट करना है और क्या क्या है, मैं अरुण गर्ग जी से गुजारिश करूंगा कि वो बताएं तफसीलात। थैंक यू। रिजल्ट बुरंदाजी करना है, डबल है तो लॉटरी करना है, लाए ना बस ठीक है। उसमें क्या करना, कितना रिजल्ट। साथियों नमस्कार, मेरा नाम अरुण गर्ग है और ৰাজ্যখনৰ পৰা পূৰ্বতে সম্প্ৰচাৰ যুৱ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে এই সংবাদমেল সম্বোধন কৰা হৈছে। যদি ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে বৰ্তমান और इलेक्शन शेड्यूल बताने के बाद मैं थोड़ा सा आप लोगों को इलेक्शन की प्रक्रिया के बारे में मैं कुछ जानकारियाँ दूंगा, और जो भी इलेक्शन के रिलेटेड सवाल होंगे वो ही सिर्फ मैं आपके सामने एड्रेस कर पाऊँगा। साथियों, सबसे पहले हमारे साथियों को जो भी गाँव देहात में और अपने घर से बैठ कर मेंबरशिप करना चाहते हैं, उनको सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से जाकर के, क्योंकि अब ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया है चुनाव की, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और इसमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट किसी की भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई भी साथी गांव देहात में घर बैठ करके अपने आप को मेंबर बना सकता है, और ऑनलाइन गूगल प्ले स्टोर से विद IYC ऐप को अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में, ये 2-3 चीज़ें बहुत जानना अच्छे से ज़रूरी है कि गूगल प्ले स्टोर से विद IYC एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है और एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन आपको यूज़ करना है मेंबरशिप बनाने के लिए। साथियों, कोई भी युवा साथी आसाम प्रदेश कांग्रेस का जो भी 18 যুৱ কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছিল ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা। যদি ইতিমধ্যে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে বৰ্ধন যাদৱে, আৰু সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ অসমতে যিহেতু যুৱ প্ৰজন্মক আকৰ্ষণৰ বাবে সদস্য ভৰ্তি অভিযান অব্যাহত আছে, গতিকে কেনেদৰে সদস্য ভৰ্তি কৰিব পাৰিব বা সদস্য হ'ব পাৰিব যুৱ কংগ্ৰেছৰ সেই সন্দৰ্ভতো প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কেনেদৰে এপ ডাউনলোড কৰি তাতে তেওঁলোকে সদস্য হ'ব পাৰিব, সেই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ৰাজীৱ ভৱনৰ পৰা জনোৱা হৈছে সংবাদমেলৰ জৰিয়তে। বিশ্ব শৌচাগাৰ দিৱসত নেটৱৰ্ক 18 ৰেকিটৰ সহযোগত ভাৰতক উন্নত অনাময় ব্যৱস্থা ৰূপে গঢ়িবলৈ 8 ঘণ্টীয়া টেলিথন মিছন স্বচ্ছতা আৰু পানীৰ ওপৰত এক অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে। এই অভিযানত সমগ্ৰ ভাৰতৰ চৰকাৰী বিষয়া, চেলিব্ৰিটি, অনাময় কৰ্মী আৰু চিন্তাশীল নেতাসকল একত্ৰিত হয়। With initiatives like this, it gets people to think, and I think that is the most important thing that you can do. And I've always believed that, as celebrities, we're selling colas and we're selling clothes and we're selling cars. There's absolutely no reason that you should not be able to put out good causes and, create awareness. খবৰ নিজাম বাতৰি লৈছো এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। সাধারণ স্টিল এনেকৈ পরে, মাইথন স্টিল এনেকৈ পরে, ধমকৈ